celebrations today highlights our school's continuous success in all its endeavors since its inception in 1996. And it is also a wonderful platform and opportunity to welcome our chief guest of the day, Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab. On behalf of the Institute, I cordially and respectfully welcome Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab. We are grateful from the bottom of our heart to you, sir, for courteously and gladly accepting our invitation for becoming the chief guest of this occasion. A man whose persona exudes serenity and calm. Our chief guest is a well-known and distinguished figure in society. He's been highly respected and known for his kind deeds and selfless services for the society. Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, belongs to 1992 batch of Indian Police Services, who joined the IPS after completion of his Bachelor's of Engineering, done his PhD on global terrorism. I would like to add that Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, is the topper of 1992 batch of IPS and was awarded with the Sword of Honor and Prime Minister's baton for being the best probationer of his batch. He has been awarded with the President's Medal for his meritorious services in 2008 and President's Award Police Medal for distinguished services in 2015. And he is the rarest of the police officer who has been awarded with 7 Director General's commendation discs. We are all very aware of the impeccable behaviors which have changed the lives of many. It's really an honor to have you, sir, today as the chief guest of the day. I deem it my pleasure to welcome Shri M.F. Farooqi, IPS ADGP, State Armed Police and Chairman School LMC. He is a living embodiment of just living and has spread a culture of perseverance and persistence, a perennial source of inspiration for all. I welcome Shri Diya Bhatti, IPS DGP retired. I also welcome Shri Rajan Gupta sir, IPS DGP retired, and has been like a miracle for police DAV. He has played an instrumental role in igniting the fire to exceed expectations. I welcome Mr. M.K. Tiwari, IPS DGP retired. I also welcome Shri Inderjeet Talwar, Vice Chairman cum retired Principal, Sainda School. I also welcome our own Madhu Bell, Manager of Police TV Public School, who is always there to appreciate the visionary leadership of our principal. I welcome Shri M.L. Yeri, Principal DAV College Jalandhar, Ex-Director, Public School DAV CMC, New Delhi. I also welcome Shri Inderbir Singh, DIG, Admin. To the world, the parents may simply be a person, but for us, they are the world. With immense pleasure on behalf of my school, I welcome all the dear parents. We do cherish your partnership and collaboration in all the endeavors of our life. We treasure your love and concern towards our institution, which is our second home. I request all of you for the kind cooperation throughout this program and making it a grand success. Light symbolizes knowledge and divinity. It not only dispels darkness, but also illuminates our souls. We pray to the Lord Almighty to let the light of education erase differences, injustice, and violence in the world and take us on the right path. To do the honor, I would like to invite our worthy chief guest of the day, Shri Gaurav Yadav sir, IPS DGP Punjab, Shri Diya Bhatti, IPS DGP Punjab retired, Shri Rajan Gupta sir, IPS DGP Punjab retired, Mr. M.K. Tiwari, IPS DGP Punjab, Mr. M.F. Farooqi, IPS ADGP, State Armed Police, Mr. Inderjeet Talwar, Vice Chairman cum retired Principal, Sainda School, Mrs. Madhu Bahel, Manager, Police DAV Public School, Jalandhar, and Dr. Mrs. Rashmi Bej, Principal, Police DAV, Jalandhar, ARO Jalandhar Zone, CBSE City Coordinator to escort for the lighting the lamp.
सद्गमया तं सोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमय छल कपट को दूर कर सन्मार्ग अब हमको दिखा अज्ञान अंधेरा दूर कर ज्ञान की ज्योति जला भय रोग कष्ट निवार दो जीवन सुखी तू बना हम विनय कर रहे भव सागर पार तू लगा भव सागर पार तू लगा भव सागर पार तू लगा Brace yourself for a high-octane dose of entertainment. The students of Police DAV are going to draw the strings of your heart and mesmerize you all with a beautiful amalgamation of orchestra, choir, and dance, an expression of sublimity and purity which could be defined as divine. So presenting before you Ish Vandanam Atithi Abhinandanam.
स्वागतम 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 कर रहे हैं आज स्वागतम दिन ये सुहाने पे आपके यहाँ आने पे दिन ये सुहाने पे आपके यहाँ आने पे मिल रही है दिल की हर एक आरज़ू स्वागतम 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 कर रहे हैं आज स्वागतम 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 कर रहे हैं आज स्वागतम गा रही है ये फिजा गा रहा है आसमां गा रही है ये फिजा गा रहा है आसमां गा रही है ये फिजा गा रहा है आसमां गा रही है ये फिजा गा रहा है आसमां दे रही है हर बहार दिल से दुआ स्वागतम 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 कर रहे हैं आज स्वागतम 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 कर रहे हैं आज स्वागतम कर रहे हैं आज स्वागतम कर रहे हैं आज स्वागतम आपस में प्यार ये 25 साल है यूं बीते कम ना हुआ कभी आपस में प्यार राहें मिली जैसे भी हमको राहें मिली जैसे भी हमको मानी नहीं कभी हार ये 25 साल है यूं बीते कम ना हुआ कभी आपस में प्यार ये 25 साल है यूं बीते कम ना हुआ कभी आपस में प्यार लम्हा लम्हा जिंदगी का दे रहा है अपनी गवाही लम्हा लम्हा जिंदगी का दे रहा है अपनी गवाही गम भी थे लाखों खुशियाँ हजारों फिर भी न थी कोई रुसवाई गम भी थे लाखों खुशियाँ हजारों फिर भी न थी कोई रुसवाई चलते रहे हाथों को थामे चलते रहे हाथों को थामे चलती रही सुबह शाम ये 25 साल है यूं बीते कम ना हुआ कभी आपस में प्यार ये 25 साल है यूं बीते कम ना हुआ कभी आपस में प्यार कम ना हुआ कभी आपस में प्यार कम ना हुआ कभी आपस में प्यार
Swift delicacy of petals do not pass in streams of length, but depth. For when the rainbow appears after a rain, everything that is monochrome becomes once more colorful. This rainbow, that is Police DAV Public School, has a plethora of achievements and a sequence of numerous actions, which as a whole is very difficult to sum up. To unveil our joys of success, and above all, a formal welcome to all, we have our own, our bright, shining comet, our principal ma'am, who with her Midas touch nurtured this titanic ship right from the first rays of dawn till the date. Dr. Mrs. Rashmi Vij, whose vision and thoughts have enlightened every soul, boosted, empowered the young students, brought laurels to the institute and even to the DAV and police family. She changed the whole and felt that the scenario brought miracles and of course done by miracles, has changed the whole landscape of how education is provided. She being the founder principal with a potential has carved a niche both for herself and for the institute by bringing many laurels and awards both for herself and for the institute. So here I invite the mentor of Police DAV Public School, Dr. Mrs. Rashmi Vij, Principal Police DAV Jalandhar, ARO Jalandhar Zone, CBSC City Coordinator, to put forth a vision behind this big venture. For this I request Mrs. Savita Sharma to please escort. A very good evening to the august gathering present here. I extend a warm welcome to Honorable Shri Gaurav Yadav ji, IPS DGP Punjab, Shri D.R. Bhatti ji, IPS DGP retired, Shri Rajan Gupta, IPS DGP retired, Shri M.K. Tiwari, IPS DGP retired, Shri M.F. Farooqi, IPS ADGP SAP Jalandhar, cum Chairman School LMC, Shri Arvind Ghai, Secretary DAV CMC New Delhi, and Shri M.L. Airy, former Director Public Schools DAV CMC, and Shri Indrajit Talwar, former Principal Sainda School Jalandhar and Vice Chairman School LMC. I also extend a warm welcome to Mrs. Madhu Bahel, Manager Police DAV School, and other distinguished police officers, principals, teachers of various schools, dear parents, worthy guests, my friends and members of the media. It gives me immense delight to warmly welcome you all to this auspicious occasion, that is the 25th annual day of Police DAV Jalandhar. We are indeed blessed by your benign presence. Today's annual day is just not another one in the series. Rather, it is of immense significance for the school as we celebrate the completion of 25 years of its excellence and stupendous achievement. The Silver Jubilee celebration is a milestone that all institutions look forward to with yearning. The school today is immersed in infinite splendor, beauty, resplendent with glory and immense zeal. My personal joy and fervor knows no bound. I feel upbeat, overwhelmed, and mirthful. My hands are joined in gratitude to God, whose benedictions led to this momentous day. Some people make the sky more beautiful for us. They awaken us to new understanding, leaving footprints that last for a lifetime. This day acquires a special hue as we have with us Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, a man who has set new benchmarks in policing and has become a role model for many for his sincerity to purpose. He is a living example of just living and has spread a culture of perseverance and persistence wherever he has been posted. In fact, his virtues are well known and need no introduction. For him, I would recite a couplet, "Jahan rahega, wahi roshni lotayega. यहाँ रहेगा वही रोशनी लौटाएगा किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता किसी चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता." We are indeed fortunate to have him at the helm of affairs.
I would be failing in my duty if I do not mention here that he's always so engrossed in his service to the state, and still he has honored our request and graced us by his worthy presence. Thank you, sir. Blessed are those who believe without seeing. And for us, such a believer was one who believed in his vision, who believed in our abilities, and in whose relentless succor and unparalleled acumen paved way for the enormous success and accomplishments that came our way since the school's inception in 1996. I'm waiting for Mr. Bhuller, who would be joining us very shortly, but I would still say what I have written for him. I bow with profound reverence to the Patriarch of Police DAV, Mr. M.S. Bhuller, IPS DGP retired. If today our diligence has paid off and the lofty dreams have been realized, we owe it all to this rare gem, the noble luminary, the perpetual generous giver, while we remain the humble recipients. My sincere salute to the creator of Police DAV, none other than our revered Mr. Bhuller. The strongest factor for success is believing you can do it and having the firm conviction that we'll surely achieve it. My heartfelt welcome to Shri D.R. Bhatti, IPS DGP retired, whose contribution to the school and the cause of education is really laudable. We feel blessed indeed to have you amidst us today. Great men are meteors designed to burn so that earth may be lighted. I warmly welcome Shri Rajan Gupta, IPS DGP retired, whose persistence to excellence bestowed the school with unparalleled success. Great people do not follow the beaten path, but leave a trail behind with their greatness. I extend a warm welcome to Shri M.K. Tiwari, IPS DGP, an educationist to the core and embodiment of ethical values and heavenly virtues with dazzling simplicity and humility. I extend my sincere welcome from the core of my heart to Shri M.F. Farooqui, IPS ADG, SAP Jalandhar, come Chairman School LMC. He is a man whose persona exudes serenity and calm, a perfectionist who may be called the personification of humility, a man of literary genius who, like a whiff of fresh air, has infused new life, energy, and enthusiasm in PAP in general and school in particular. For him, I would say, तारीफ करते हैं आप क्योंकि तारीफ के काबिल हैं आप, ना भी करें तारीफ तो काबिले तारीफ हैं आप. I also extend a warm welcome to Arvind Ghaiji, Honorable Secretary, DAV CMC, New Delhi, who is also the President of Arya Samaj Model Town, Jalandhar, and has kept the torch of DAV lit in this region. I also welcome Shri M.L. Eri, former Director Public Schools, DAV CMC, and ex-Principal DAV College, Jalandhar, who is a man of great wisdom and foresight. We are indeed inspired, sir, by your benign presence. I also welcome Shri Inderjeet Talwar, former Principal Sainda School, Public School, Jalandhar, and Vice Chairman School, LMC. We continuously keep learning from his wisdom and experience. We are honored to have amid us Mrs. Madhu Behal, Manager, Police DAV School, who supports and guides us in our day-to-day working of the school. मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल लोग साथ आते गए कारवा बनता गया. Police DAV, that started in the barracks of 7th Battalion in 1996, is today a shining beacon in the field of education and nurturing young minds into leadership roles and success, grooming them into good human beings. With wobbly steps, the journey started, and lo, 25 years have passed. It is no less than a miracle that the school, which was started with only 247 students and 9 teachers, has assumed a magnificent stature as for as many 5,200 students and 230 teachers. The school today boasts of the state-of-art infrastructure with 150 rooms, out of which 106 classrooms are fitted with smart boards, high-tech labs, performing arts block, magnificent administrative block, an ever-growing library, sports ground, and the newly built pre-primary wing with 45 state-of-the-art rooms commissioned by Shri Iqbalpreet Singh Sahota, IPS Special DGP, the then chairman of school, on 21st August 22, equipped to give a truly fun-filled, unique learning beginning to the tiny tots. Gratitude makes us young in spirit, for it enables us to see the miraculous hand of God in everything we see around. Today, when I stand here,
and reflect over the years gone by, I am reminded of the time when Police DAV was a tiny sapling nurtured by the caring hands of the founding fathers. My eternal gratitude to those visionaries. Shri M.S. Bhular, IPS DGP retired, the founder chairman, the man who envisaged the future. Shri Samant Goelji, IPS Director Raw, the then Commandant 7th Battalion. Mrs. Sudesh Alawat, the founder manager, whose continuous guidance helped to traverse the challenging path. Mrs. V. Puri for her broad vision and educational know-how. Shri R.S. Gill, IPS DGP retired, whose gentle and kind hand steered us in the right direction. Shri D.R. Bhatti, IPS DGP retired, whose continuous support smoothened the obstacles in our growth. Shri Rajan Gupta, IPS DGP retired, who stood like a rock and made the finances and other resources available for the construction of the school building and supported us in framing the school policies. Shri M.K. Tiwari, IPS DGP retired, whose legacy of high principles, integrity, and hard work guided and steered us in all our endeavors and helped frame the classroom pedagogy. And Shri P.K. Uppal, IPS DIG retired, who lent strength and moral support during the construction of the school and day-to-day working of the school. I express my heartfelt gratitude to Padam Shri Dr. Poonam Suri ji, President DAV CMC New Delhi, who was unable to join us on our landmark celebration due to his extremely busy schedule, but his perennial blessings and good wishes are always with us. I also thank our Director, Public Schools, Dr. Nisha Peshin, who has always supported and guided us in all our endeavors. Overcoming challenges, obstacles, less than perfect conditions, with each passing year, we have grown stronger and stronger, more skilled, more confident, and more successful. I express my gratitude to Team Police DAV, comprising of all my faculty members, non-teaching and supporting staff, who have at my every call have stood with me and given shape to my dream. I'm also grateful to the people who stood by us and worked to the optimum to ensure that the school flourishes by leaps and bounds. Let us celebrate those charming founding teachers who may not be part of the school today as they have moved on, yet the impressions left by them are there. They contributed a lot in framing the school culture of dedication and excellence. My thanks to Mrs. Anuja Sharma, Supervisor Senior Secondary Sector, Mr. Rupinder Singh, Supervisor Secondary, Mrs. Ritu Gandotra and Mrs. Sandeep Sidana, Supervisors Primary, Mr. Anuj Sharma, HOD IT Department, Mr. Navdeep Sharma, HOD Departments of Physics and the brain behind the success of school at NASA, Mrs. Sandhya Devan, the Cultural Head, Mrs. Rekha Sharma, the Co-Editor, School Publication, to name a few. The first function, Van Mahotsav, was held in the month of July in 1996, in which tiny saplings were planted, symbolic of the huge banyan tree the school was going to be in future, a canopy to many, under the shade of which many were going to bask. And on this evening of December 22, we celebrate the RAJATAM UTSAV, which is indeed a blessing, as today Police DAV stands vibrant and mighty, exhibiting resilience and splendor to the fullest, taking all challenges in its stride and stepping into the new era. Today, the school is a leader and a mentor, not only amidst Police DAV schools or DAV schools, but also enjoys awe and reverence across India for its multifarious distinct traits and achievements. The air whispers of dreams strewn across, which are molded into reality by nurturing soil of excellence interlaced with value sensitivity and social awareness. With each passing year, the number of laurels brought by students increased considerably. Because of incessant chiseling in inter-house activities and in sports, the students started to bag national and international championship. Competing with the best schools of India, the students were invited to participate in the Space Settlement Design Competition organized by NASA in USA, thereby firmly establishing year after year Police DAV on the world map. The school was also selected by British Council to be part of UKERI, UK India Education and Research Initiative, a joint project along with other schools of Punjab, which opened new horizons to groom students for world citizenship and international practices through social and cultural exchange programs and collaborative projects with schools abroad. The school formed a synergy with Indo-Swedish academic and cultural exchange program, where reciprocation of delegates took place between both countries.
Delegates from China, Japan, Korea, and England visited school and developed a long-lasting relationship with the students. The school students who were also selected by CBSE to visit Japan under Genesis, the Japan East Asia Network of Exchange for Student and Youth Program, thrice. The school has been laying a strong foundation for nurturing scientific temper, that is, questioning and observing day-to-day phenomena and then analyzing them. They are motivated to think anew, find solutions for the existing problems. Year after year, the students bagged honor in the Young Innovators Award organized by National Innovation Foundation run by the Department of Science and Innovation, Government of India, in the nationwide contest called Ignite for 10 years. One of the students, Shweta Sharma, has the unique distinction of winning this award thrice for consecutive years and was lovingly nicknamed as the Cloudy Girl by Shri APJ Abdul Kalam, who always gave away the prizes himself. The school was also honored with the Scout Award by the National Innovation Founded at Rashtrapati Bhavan in 2015 for encouraging innovation among students. It was the dividend of strategic, well-planned sports training and provision of wide array of games, addition of international games, which helped students to know their calling and excel in sports of their interest. Punjab Police coaches, vast infrastructure, rigorous training, and facilities provided by PAP and school played an instrumental role in putting the school on the international sports map of the world. The sportsmen of our schools have bagged the overall trophy in DAV National Sports Tournament for 18 consecutive years, and CBSE championships at national and open games year after year. The school moves forward, upward and upright, creating a cusp between strong academic foundation and stellar sports spirit, forward thinking and deep-rooted values. I summarize here by a couplet by Iqbal. तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़माओ मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, गए दिन की मैं तन्हा था अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। Our students achieved brilliant academic results in CBSE board exams in 2022. In class 12th, the highest percentage scored in commerce stream was 97.8, followed by 97.6 in non-medical, 97.4 in humanities, and 96.8 in medical stream. In class 10th, the highest percentage score was 98.2. The heart swells with pride when we come to know that many of our students have been getting admission in professional colleges of repute like AIMS, IIT, and IIMs, and are pursuing brilliant careers. Om Gupta, the school prodigy, who made the school proud by scoring 99.97 percentile, the highest in the city in JEE Mains, and an All India rank 215, is currently pursuing BTech at IIT Delhi. We do not claim we are perfect, but while chasing perfection, we catch excellence. The school provides all opportunities to students to prove their mettle and get experience and grooms them for higher competitions as they are going to face after the completion of their school education. In NTSE scholarship exam organized by NCRT, Om Gupta, Mayank Kumar, and Vaibhavi Yadav got the national scholarship. In the Earth Science Olympiad 2002, organized by the Geological Society of India, Bangalore, Abhijit Singh Khera was the only student from Punjab to represent in Team India. He represented India in the international event and bagged a gold and silver medal for his projects. He will be felicitated by Prime Minister Shri Narendra Modi ji in New Delhi later this month. In a nationwide competition organized by CSR Innovation Award, the school team bagged the first place. Vinay Kumar of class 2nd, school proud. In Kala Utsav, the school bagged the first prize at the district, zonal and state level competition in fine arts and performing arts categories. The teams are now all set to participate at the national level. In Bal Mela organized by Rodcrest Bhavan held the school team Bhangra bagged the winner's trophy at the state level held at Batenda. The team had the unique honor of winning the state song, paper bag making, Hindi poem recitation, yoga, second position in podcast, PowerPoint presentation is a longing, a dedication to the cause of education, to light the ignoble dark, to create the students as millions of stars who can further spread the light in the world. Somewhere, something incredible is waiting to be known.
and the whole universe has conspired to make it happen. The days have snowballed into months and years, and school has reached the glorious moment, the celebration of Silver Jubilee. The school is bathed in ethereal glow. New petals are waiting to unfold. The journey continues. Today's ballet, Agaz Se Shaheen Parwaz, is a trip down to the memory lane, rekindling the days of yore and the flight that the school has taken to achieve the heights it has reached. Let's revisit the proud and nostalgic moments of the glorious 25 years of Police DAV. We seek forgiveness if some details are missed in the dramatization of the journey of the school. I thank you all for joining us in our endeavor. Let's bequeath to our children not riches, but the art of living happily and peacefully. And together we can and we will. Let's take this pledge. अभी तो आगाज किया है, अभी तो आगाज किया है, परवाज अभी बाकी है. बुलंदी है जब तेरा आखिरी ठिकाना, बुलंदी है जब तेरा आखिरी ठिकाना, तो ऊंचाई से डर कैसा. अब भी शुरू है सफ़र तेरा, अब भी शुरू है सफ़र तेरा. अभी तो आगाज़ किया है, परवाज़ अभी बाकी है. अभी तो आगाज़ किया है, परवाज़ अभी बाकी है. I once again thank you all for your benign presence. A word of appreciation, a token of gratitude, may indelibly etch its presence in our mind. So, here is the time to honor our guests, the elite guest of our function. For this, I request our worthy Chief Guest, Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, Shri M.F. Farooqui, IPS ADGP State Town Police, and our worthy Principal Ma'am to hand over the token of love and gratitude to our elite guests. I request a worthy Chief Guest and Shri M.F. Farooqui sir, along with Principal Ma'am, to hand over the token of love and gratitude to Shri M.L. Airy, retired Principal, DAV College, Jalandhar, ex-Director, Public School, DAV CMC, New Delhi. Now is the time to honor Shri Inderjeet Talwar, Vice Chairman cum retired Principal, Sainda School. I request a worthy Chief Guest, Farooqui sir and Principal Ma'am to give a token of love and gratitude to Mrs. Anuja Sharma, Principal, DAV School, Chandigarh. Now is the time to honor Arvind Ghai sir, Secretary, DAV CMC, New Delhi.
I now request our worthy chief guest, Farooqi sir and principal ma'am, I request sir to give a token of love and gratitude to Shri Surinder Kumar, AIG STF Jalandhar Range. Now is the time to honor Shri Harmanveer Singh Gill, IPS Commandant 7th Battalion. Now is the time to honor Mrs. Sudesh Alawat, Founder Manager, Police DAV Public School. Since she is not there, Mrs. Monisha, Principal of her school, Dr. R.C. Jain, Innovative Public School, I request her to please take the memento on her behalf. Mrs. Monisha. Now is the time to honor Shri Inderbir Singh, DIG Admin. I now request a worthy chief guest, Farooqi sir, Principal ma'am, to honor Shri Bhupati, Commissioner of Police. Now is the time to honor Mrs. Tiwari. So I request ma'am to please come, Mrs. Tiwari. Now is the time to honor Shri M.K. Tiwari, IPS DGP retired. I request a worthy chief guest, Farooqi sir, Principal ma'am, to honor Shri Rajan Gupta sir, IPS DGP retired. Sir played an instrumental role in igniting the fire to exceed expectations that will keep blazing the school to flourish and is still reaching greater heights.
I now request our worthy chief guest, Farooqi sir and ma'am, to honor Shri D.R. Bhatti, IPS DGP retired. I request our worthy chief guest, Shri Gaurav Yadav sir, Farooqi sir, I request our worthy chief guest sir, Farooqi sir and ma'am to honor Shri M.S. Bhullar, IPS DGP Punjab retired. He has been the founder chairman of Police DAV Public School, a person with altruistic bent of mind. The school has started the old barracks of 7th Battalion and now stands as a vanguard in the whole northern India. And now is the time to honor Mrs. Madhu Bail, Manager, Police DAV Public School, Jalandhar. Madhu ma'am is always there to appreciate the visionary leadership of our principal, the concerned efforts of the staff and its students, always believing in making us believe that auspiciousness be unto all. I now request our worthy chief guest, Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, Bhullar sir, IPS DGP Punjab retired, and Principal ma'am to give a token of love and gratitude to Shri M.F. Farooqi, IPS ADGP, State Armed Police, Chairman LMC. And now is the time to honor the chief guest of the day, Shri Gaurav Yadav sir. For this, I request Shri Bhullar sir, Shri M.F. Farooqi, IPS, ADGP, State Armed Police, to give a token of love and gratitude to Shri Gaurav Yadav, IPS, DGP, Punjab. Thank you, sir, for sparing your valuable time to us. And there is a small request now, a small token of love and gratitude to a worthy principal ma'am from the chief guest of the day, Shri Gaurav Yadav. A small token of love and gratitude to the worthy principal, Dr. Mrs. Rashmi Vij, Principal, Police DAV, ARO Jalandhar Zone, CBSE City Coordinator. She is the founder principal, and she's nurtured this institute just like a small baby, like a sapling, and look how flourishing the school is now. Words are powerful motivators and have the ability to transform the history of a nation and bring transition in the perception and mindset of the people. Any grand event requires the keen interest of the special guest,
special person of the day, whose knowledge is as deep as the ocean and heart is as broad as infinite skies. So it is a time to hail such a person. I request the Honorable Chief Guest of the Day, Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, to address the young minds, motivate them by his words of wisdom. For this, I request Dr. Mrs. Rashmi Vij, Principal Police, DAV Public School, Jalandhar, to escort. Shri M.S. Bhullar, Founder Chairman of this school, Dr. Vij, Shri D.R. Bhatti, Shri Rajan Gupta, Shri M.K. Tiwari, Shri Arvind Ghai ji, Shri Airy, Mrs. Madhu Behel, parents, students, faculty members, members of the media. First of all, I would congratulate the entire police DAV family on the 25th anniversary. सारियां नू बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ, because it has been a journey of 25 years which everyone has taken together and the school family has grown together. So it is a major milestone, major achievement. And I would say, Principal Ma'am gave a very long speech and I was just mentioning to Arvind ji, so that I was SSP here in 98 and I also had a stint as Commissioner of Police. The one constant thing with this DAV school has been Dr. Rashmi Vij. So 3 cheers for Dr. Vij. She was the principal when I was here in 98, 96, which the school was founded. So I think a lot of contribution, a lot of credit goes to her. Of course, Mr. Bhullar was the founding father. He led the school and a band of police officers, Mr. Tiwari, Mr. Bhatti, Mr. Rajan Gupta headed the committee for 10 years and supported the school in unwavering manner. So the people from the DAV family also owe our gratitude, our credit, because you see, it's brand DAV. The curriculum, the way of teaching, that is DAV. The police has provided infrastructural help and support. And together, we have grown. I would also wish all the best to the school, to the students that made scale new heights. What I have seen, and I have been really impressed that 5,200 students, and I was told at the peak we had 6,000 students and 150 classrooms, modern state-of-the-art facilities, and the school is doing well academically. People are making it to IITs, to AIMS, to various top competitive exams. They are clearing that, and at the same time, there have been sterling sports achievements. So, for all-round personality development of the student, I think the school has devised the right focus, the right balance between academics and sports and personality development. I was very impressed with the cultural program, cultural presentation, and the school is doing well. I would, at this juncture, would also offer the support of the Punjab Police from whatever support is required to take the school forward, to support the vision, and we would definitely keep the flag flying. Congratulations, wish you all the best, thank you. Thank you, sir. Thanks for your inspiring words, sir. The key to realizing a dream is to focus not on success, but significance, and then even the small steps and little victories along the path will take a greater meaning. Journey of 1,000 miles begins with a single step. The journey of Police DAV Jalandhar began in 96 and has come a long way. It was long and arduous, but perseverance and indomitable spirit of the custodians of this dream beat it all. And today, when we look back at 26 years of long trek, everything looks surreal. The Bele Agar se Shaheen Parvaz, a gratifying journey from humble beginning to magnificent flight, will take you down the memory lane and unveil how history was created. I need to mention here that 600 students will enthrall you with their amazing performance, showcasing a plethora of milestones attained by this magnificent institution. Presenting Agar se Shaheen Parvaz.
आसमान पर चांद सितारे, इस धरती पर जितनी बहार, नदियाँ झरने संग लहरों के मिलकर गाएं आज तराने। वह कमाल है, कैसी चाल है, वह कमाल है, कैसी चाल है, बदल दिए इतिहास पुराने। गांव-गांव शहर में गूंजे पुलिस DAV नाम प्यारा। जयकारा गूंजे, जयकारा गूंजे। दयानंद से शक्ति लेकर, हंसराज से भक्ति लेकर, पंजाब पुलिस की एकता लेकर, वीरता और विवेक को लेकर, दयानंद से शक्ति लेकर, हंसराज से भक्ति लेकर, पंजाब पुलिस की एकता लेकर, वीरता और विवेक को लेकर, रश्मि की रोशनी से रोशन, रश्मि की रोशनी से रोशन, पुलिस DAV का ये सितारा। जयकारा गूंजे, जयकारा गूंजे। ईंटें नहीं जज्बात लगे हैं इस धरती को मिलने में, इस धरती को मिलने में, मेहनत के कई साल लगे हैं इस बगिया को खिलने में, इस बगिया को खिलने में। ईंटें नहीं जज्बात लगे हैं इस धरती को मिलने में, मेहनत के कई साल लगे हैं इस बगिया को खिलने में। रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें, खुशियों का संसार प्यारा। जयकारा गूंजे, जयकारा गूंजे। उड़ते हैं इस डाल के पंछी, आसमान को चूम रहे, आसमान को चूम रहे, दुनिया के हर एक कोने में पंख फैलाए घूम रहे, पंख फैलाए घूम रहे। खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, सबसे आगे हम ही रहे हैं। धरती हो जा वो आसमां, सबने हमारे गीत कहे हैं। नासा की धरती पर चमके, नासा की धरती पर चमके, पुलिस DAV नाम प्यारा। जयकारा गूंजे, जयकारा गूंजे। मैं पुलिस DAV हूं, कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं। मैं आज अपने यौवन के गौरव में लहराता हुआ सफलताओं की बुलंदियों को छू रहा हूं। मेरा सृजन उन महानुभावों की दूरदर्शिता, निष्ठा और कर्मठता का ही परिणाम है। बसंत आने से पहले
मैंने पतझड़ को भी देखा है। मैं विचारों के गर्भ में ख्वाब बनकर प्रत्येक घटना का साक्षी हूं। The way our courageous and brave policemen are fighting back the terror and handling the turmoil to keep the state safe and secure, I feel it's our duty to do something for them too. What do you think, Mr. Puller? Sir, I am also worried. मुझे जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि अब तो हमारे पुलिस पर्सन्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे। What can we do for them? Do you have something in mind? मेरे जहन में है कि हम अपने पुलिस पर्सन्स के बच्चों के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपना एक स्कूल खोलें, जिसमें बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ साथ बेहतरीन एजुकेशन और संस्कार दिए जा सके। Great thought. This will not only be a great support for our police employees, but also a great initiative for a bright future of their kids. Yes, sir. हमारे ऑफिसर्स की तो ट्रांसफर होती रहती है, तो मिस्टर भुलर, हमें एक ऐसी संस्था ढूंढनी चाहिए जिससे मिलकर हम अपना स्कूल शुरू कर सकें। सर, नन अदर देन DAV, क्योंकि DAV एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पुरानी और बेहतरीन संस्था है। Mr. Bhular, you are one of my best officers, and I can't think of anyone better than you to make this mission a success. Best of luck. पुलिस DAV की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अमृतसर के बाद जालंधर में जो स्कूल खुलने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वे एक ऐसा स्कूल हो जो मील का पत्थर साबित हो, जिसमें तहजीब, तौर तरीके, संस्कारों के साथ साथ ऐसी एजुकेशन दी जाए कि बच्चे ही नहीं, उनके परिवार भी स्कूल पर गर्व महसूस कर सके। राइट सर, एक ऐसी शिक्षा जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े। एक ऐसा स्कूल जो हमारे बच्चों को काबिलियत के मुकाम तक ले जाए और हम सब फक्र महसूस कर सकें। I want to provide them a level playing ground, जहां IPS से लेकर पुलिस के हर कर्मचारी के बच्चों को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिले। और ऐसे बेहतरीन स्कूल के लिए जरूरी है एक कुशल प्रिंसिपल का होना, जो अपने विजन, अपनी मेहनत से स्कूल को सफलता के आयाम तक ले जाए। एग्जैक्टली। तो मिसेस अहलावत, ऐसे प्रिंसिपल को ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं जानती हूँ जिम्मेदारी बड़ी है और इसे निभाने का हौसला भी बड़ा होना चाहिए। ऐसी शख्सियत मेरे जहन में है। वह ऐसी रश्मि है जिसमें आशा की किरण भी दिखाई देती है। I know, रश्मि, it's a big challenge, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम इसे निभा लोगी। थैंक यू मैम, बट मेरी कॉलेज में परमानेंट जॉब है। मैं सेटिस्फाइड हूँ और खुश भी हूँ। फूल की सुगंध को बांधा नहीं जा सकता। हम तुम्हारे अंदर की जिस लीडरशिप क्वालिटी को देख रहे हैं, तुम उसे पहचानने की कोशिश करो। ईश्वर ने जो प्रतिभा, जो टैलेंट तुम्हें दिया है, उसका उपयोग करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना?
मेरी अपने परिवार के प्रति भी तो जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं इतनी बड़ी चुनौती का सामना कैसे कर पाऊंगी? आई एम सरप्राइज्ड रश्मि, यह तुम कह रही हो? चुनौतियों का सामना करना तो तुम्हारा स्वभाव है। हम भी तो छोटी उम्र में प्रिंसिपल बन गए थे। मन में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। समाज और देश के प्रति भी तो तुम्हारी कुछ मौलिक जिम्मेदारियां हैं। अगर भगवान तुम्हें जिम्मेदारियों को निभाने का मौका दे रहा है तो तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए। और रही स्कूल चलाने की बात, तो हम तुम्हारे साथ हैं। वेरी नाइस, थैंक यू मिसेस अहलावत। हमें अपने स्कूल के लिए एक ऐसी ही सूझवान और प्रतिभाशाली प्रिंसिपल की जरूरत थी। मैम, ये है स्कूल का मॉडल और मोटिव। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है। फिलहाल हम अपना स्कूल बैरिक्स में ही शुरू करेंगे। वैसे भी हमारे स्कूल का मकसद पैसे कमाना नहीं है। हम तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देना चाहते हैं ताकि वे अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश का भी भला कर सकें। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये वो वक्त था जब मेरी बुनियाद की तारीख लिखी जा रही थी। मेरे अस्तित्व को विचारों में बुना जा रहा था। एक बालक के जन्म से पहले जो उत्साह सबके चेहरों पर रहता है, बिल्कुल वैसी ही चमक मैंने उन सब आंखों में देखी थी। और किसी बालक के जन्म पर जो उत्सव मनाया जाता है, उससे भी भव्य जश्न उस वक्त मनाया गया था जब मैं वजूद में आया था और मुझे पहचान मिली थी पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल जालंधर। हैशा दम लगा दम दम हैशा, हैशा दम लगा दम दम हैशा। हाँ, रुकना नहीं अब थकना नहीं, बस चलते जाना है। हवाएं गरम कर सच्चा करम, बस लक्ष्य को पाना है। खुद को है खुद पे यकीन, मंजिलें दूर नहीं। खुद को है खुद पे यकीन, मंजिलें दूर नहीं। हाँ, हैशा दम लगा दम दम हैशा, हैशा दम लगा दम दम हैशा। सत श्री अकाल जी। वाह जी वाह, इतना सज धज कर किधर की तैयारी है जी? भाभी जी, हम तो पुलिस डीएवी स्कूल जा रहे हैं अपने बच्चों की एडमिशन करवाने। ओ भाभी जी, ये क्या करने लगे हो? अभी तो स्कूल की शुरुआत है। इस स्कूल के तो अपने फ्यूचर का नहीं पता, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या बनाएगा? वैसे भी शहर में इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, फिर पुलिस डीएवी ही क्यों? भाई साहब, हम कल ही तो स्कूल में प्रिंसिपल और स्टाफ को मिलकर आए हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा।
पता है, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स, एसएसपी, डीआईजी, आईजी के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ इसी स्कूल में पढ़ेंगे। वैसे भी ये स्कूल स्पेशली हम पुलिस वालों के बच्चों के लिए ही खोला गया है। ठीक है जी, आपके बच्चे आपकी मर्जी। हमारा बंटी तो बड़े स्कूल में ही पढ़ेगा। बारिशों की बूंदों में नन्ही नन्ही कलियों का खिलना कमाल है। सपने सजोए गाए गीत खुशी के भरे सुर और ताल है। लगते प्यारे ऐसे आसमां में तारे जैसे, लगते प्यारे ऐसे आसमां में तारे जैसे, इनकी हंसी पे सारी दुनिया फिदा है। आयशा दम लगा दम दम, आयशा आयशा दम लगा दम दम, आयशा। खेलते हुए झूमते हुए पढ़ते ही जाएंगे हम, पढ़ते ही जाएंगे हम। सच की डगर न डर का फिक्र, बढ़ते ही जाएंगे हम, बढ़ते ही जाएंगे। हौसलों से जीतेंगे दुनिया की बाजी को, हौसलों से जीतेंगे दुनिया की बाजी को, नंबर 1 कहलाएंगे हम। आयशा दम लगा दम दम, आयशा आयशा दम लगा दम दम, आयशा। मैं उस समय प्रसन्नता से झूम रहा था। ये मेरे भी बचपन का समय था। मस्ती करते बच्चों की किलकारियां चारों ओर गूंज रही थी। बेशक उस गूंज में मुझे इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की गाथा सुनाई दे रही थी। ये वो नन्हे नन्हे बीज थे जिन्हें अपने भव्य और फलदार वृक्ष होने का भी आभास ना था। और मेरा प्रयास छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पंखों को हौसलों की उड़ान देना था कि वो कभी डगमगाए नहीं, बल्कि खुद अपनी मंजिल तय करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गण गण गणपते नमो नमः, गण गण गणपते नमो नमः, गण गण गणपते नमो नमः, गण गण गणपते नमो नमः। गणपति देवा करते जो सेवा, समृद्धि पाए जग में वो मेवा। गण गण गणपते नमो नमः, 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 ओ गण गण गणपते नमो नमः। जन्म लियो नंदलाल गोपाला, झूम उठी सब ब्रज की बाला। जन्म लियो नंदलाल गोपाला, झूम उठी सब ब्रज की बाला। खेलत नाचत मुरली वाला, सुंदर मोहन जगत का पाला। मनमोहन की बात निराली, हो संग साजे राधा मत वाली। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे राधे। हो देखो 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 आए हैं राम, रावण को
राम राम सीता राम राम राम, राम जी की लीला है कितनी महान। राम 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 सीता राम राम राम, राम जी की लीला है कितनी महान। अरे रा रा जा रा रा रा, किसने हमें रंगों से मारा, बड़ी प्यार की पिचकारी और नफरत के रंगों को झाड़ा। अरे रा रा जा रा रा रा, किसने हमें रंगों से मारा, बड़ी प्यार की पिचकारी और नफरत के रंगों को झाड़ा। दिलिए में बोले होली है जी, प्यार बढ़ाए होली है जी, गम को बुलाए होली है जी, मिलकर गाए होली है जी, होली है जी, होली है जी, होली है जी, होली है, होली है जी, होली है जी, होली है जी, होली है, होली है। आई बैसाखी पक्कियां कणकां कर कर खुशी मनाई, आई बैसाखी पक्कियां कणकां कर कर खुशी मनाई। पन पन डारा बिच मेले दे खूब है रौनक लाई, पन पन डारा बिच मेले दे खूब है रौनक लाई। धन्य है मेरे देश की धरती, जहाँ सूफी संत करतार हुए, समय समय इस धरती पर भगवान के कई अवतार हुए। याद रखें हम उनकी शिक्षा, बांटे सभी में प्यार, एकजुट होकर सदा मनाए इस देश के हम त्योहार। एकजुट होकर सदा मनाए इस देश के हम त्योहार। आई बाबा नानका, जाई बाबा नानका, ये हो जइया खुशियां ले आई बाबा नानका। आई बाबा नानका, जाई बाबा नानका, ये हो जइया खुशियां ले आई 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 बाबा नानका। ओए होए होए होए, क्या परफॉर्मेंस थी जी। वंडरफुल जी वंडरफुल। ओ बल्ले बल्ले कराती जी। कितने ही प्यारे लग रहे थे सारे बच्चे। सिमरन ने कितनी अच्छी एक्टिंग की। अर्श का तो कॉन्फिडेंस देखने वाला था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बच्चा स्टेज पर इस तरह डांस कर लेगा। कुल मिलाकर बच्चों ने कमाल ही कर दिया। सच में कमाल तो पुलिस डीएवी ने कर दिया जी। देखो जी, कुछ भी हो जाए, हमारा बंटी अब तो पुलिस डीएवी में ही पड़ेगा। शहर में हर तरफ पुलिस डीएवी के ही चर्चे हैं। इतने कम समय में आप इतनी बड़ी कामयाबी को कैसे देखते हैं? इस सफलता के पीछे हमारी मैनेजमेंट, हमारा स्टाफ और पेरेंट्स हैं। आज पुलिस डीएवी पेरेंट्स की पहली पसंद है, ऐसा क्यों? मैम,
what is the vision and mission of Police DAV? हमारे फाउंडर ऑफिसर्स, मैनेजमेंट और हमारे स्कूल का मकसद बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना है जो स्ट्रेस फ्री हो, ऐसी शिक्षा जो बच्चों को बोझ ना लगे, पनिशमेंट ना लगे। बच्चे हंसते खेलते शिक्षा के साथ साथ खुद को सेहतमंद भी बनाए। एक ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा, अपनी रुचि को पहचान कर स्वयं अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकें। एक ऐसी शिक्षा जिससे वह एक कामयाब इंसान होने के साथ साथ अच्छे नागरिक भी बने। मैं ते अक्सर कहना हुन्ना कि साडे स्कूल दा मकसद पैसे कमाना नहीं है। साडा तां इक्को एक मोटिव, इक्को एक सुपना है कि साडे बच्चे गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ते चंगे संस्कार लैके वड्डे अफसर बन सकन। ते इन्हां वड्डे सुपनियां नूं पूरा करन लई स्कूल भी तां वड्डा ही होना चाहिदा है। भावें साडे स्कूल कोल बहुते फंड नहीं हन, पर साडा जज्बा बहुत वड्डा है। मैं अपील करदा कि तुसी सारे स्कूल दी बिल्डिंग वड्डी बनाउण लई अपना श्रमदान दिओ। मैं चाहना कि अपने बच्चों लई आप बनाए स्कूल ते असी सारे मान कर सकीए। मैं आप स्कूल दी बिल्डिंग बनाउण लई जिन्नी हत्थी मेहनत कर सकदा करांगा ते उम्मीद करदा कि तुसी सारे मेरा साथ दिओगे। रास्ते कठिन चाहे जितने भी हो, पर लक्ष्य को पाकर रहेंगे। है खुद पे यकीन, हम रुकते नहीं है, सबको बता कर रहेंगे। मिलके चले हैं, मिलके चलेंगे, मिलके चले हैं, मिलके चलेंगे, साथ कभी छोड़ेंगे न हम। हैशा दम लगा दम दम, हैशा हैशा दम लगा दम दम, हैशा हैशा दम लगा दम दम, हैशा हैशा दम लगा दम दम।
एक्सीलेंट। स्कूल जिस तरह से ग्रो कर रहा है, आप सबकी मेहनत नजर आ रही है। Congratulations to you for this wonderful job. थैंक यू सर। यह सब स्कूल मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन सर के सहयोग और उनका हमारे प्रति विश्वास का ही परिणाम है। वाह, वेरी नाइस। मैंने अक्सर ही मैनेजमेंट को प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को मैनेजमेंट के बारे में पीठ पीछे बुरा भला ही कहते सुना है, पर आपके इंस्टीट्यूशन में चेयरमैन प्रिंसिपल और स्टाफ की तारीफ करते नहीं थकते, और प्रिंसिपल सारी सफलता का श्रेय मैनेजमेंट को दे रहे हैं। टीम वर्क की यही भावना आपको कामयाबी की राह पर ले जा रही है। सर, अब तो सिविलियंस भी अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सिफारिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे बच्चों के साथ सिविलियंस के बच्चे भी पढ़ेंगे तो हम सोसाइटी को और बेहतर बिल्डअप कर सकेंगे। इनफैक्ट हमारे बच्चों को भी सिविलियन बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिविलियंस भी पुलिस की स्ट्रगल, उनकी मुश्किलों को समझकर पुलिस की रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इससे स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए फंड्स भी रेज होंगे। सिविलियंस हमारे स्कूल में आएंगे तो डेफिनेटली स्कूल का प्रसार तो होगा ही, लोकप्रियता भी बढ़ेगी। One day it will be the best school of city. God willing, sir. हमारे स्कूल की बढ़ती लोकप्रियता आप सबकी मेहनत का परिणाम है। जैसे जैसे स्कूल बड़ा हो रहा है, हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी हो रही हैं और पेरेंट्स की उम्मीदें भी बड़ी हो रही हैं। मैं चाहती हूँ हम जो एनुअल फंक्शन करें वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि देखने वालों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ दे। जी मैम, हमारी स्किट जो स्टेट लेवल पर विनर रही है वे दिखा सकते हैं। मैम, हमारे स्कूल का भंगड़ा जो नेशनल लेवल पर फर्स्ट आया है वह प्रेजेंट कर सकते हैं। मैम, हमारी 3-4 डांस आइटम्स जो इंटर स्कूल कंपटीशन में फर्स्ट आई हैं वह भी रेडी हैं। मैम, इन सबको मिलाकर एक वैरायटी प्रोग्राम रख लेते हैं जो बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा। डियर टीचर्स, एनुअल फंक्शन का मतलब यह नहीं होता कि पेरेंट्स आएं, अपने बच्चों की उपलब्धियां और परफॉर्मेंस को देखकर तालियां बजाएं और चले जाएं, बल्कि स्कूल में जब भी कोई आए वह स्कूल के वातावरण से, डेकोरेशन से, रखरखाव से, डिसिप्लिन से, प्रबंधन से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। हमने बच्चों को मात्र शिक्षित नहीं करना, समाज को भी बेहतर बनाना है। हमारा एनुअल फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो एंटरटेन तो करे ही, साथ साथ हमारी और हमारे समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करे, ताकि हम समाज को सभ्य बनाने में अपना योगदान दे सकें। जब छोटे छोटे बच्चे किसी बड़ी बात को कह जाते हैं तो वह बात बड़ों के दिलों को छू जाती है। समाज को बदलने, उसको सीख देने का काम शायद बच्चों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। जागो 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 जागो
जिंदगी मौत बन रही है अब तो जागो, जिंदगी मौत बन रही है अब तो जागो, सोच एक बोझ बन रही है अब तो जागो, सोच एक बोझ बन रही है अब तो जागो, तोड़कर झूठ की ये खोखली दीवारों को, तोड़कर झूठ की ये खोखली दीवारों को, छोड़ दे हम सभी अब बुरे संस्कारों को, हम सभी अब बुरे संस्कारों को, अज्ञानता की आग को तुम ज्ञान से बुझा दो, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। माँ के हाथों में था पलता रहा जिनका बचपन, बाप के पैसों पे फलता रहा जिनका बचपन, माँ के हाथों में था पलता रहा जिनका बचपन, बाप के पैसों पे फलता रहा जिनका बचपन, हर खुशी अपनी छोड़ी बच्चों की खुशी के लिए, हर खुशी अपनी छोड़ी बच्चों की खुशी के लिए, बने इंजीनियर या डॉक्टर इसी के लिए, मिली जो शोहरतें तो भूल गए प्यार माँ का, किया बंटवारा घर का फेंका सब समान माँ का, पकड़ के हाथ जो कहते थे माँ मेरी है, आज इस बात पे लड़ते हैं माँ तेरी है, आज इस बात पे लड़ते हैं माँ तेरी है, आज इस बात पे लड़ते हैं माँ तेरी है, खुद को थोड़ा बदलो माँ बाप को संभालो, जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। युगां युगां तो औरत दा सतिकार घटाया जांदा क्यों, अणजम्मियां धीआं नूं भुक्खां विच दफनाया जांदा क्यों, औरत औरत दी बन के वैरी डाडा कर्म कमाया, अपनी कुखों जम्मी धी दा रो रो सोग मनाया, रोंदी मानू मारन ताने तू मुंडा क्यों नहीं जाया, और पर
ਕੰਬਿਆ ਕਲੇਜਾ ਉਹ ਭੱਜ ਸਿਵਿਆਂ ਵੱਲ ਗਈ। ਕੱਢ ਕਬਰ ਚੋਂ ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬੱਕੜੀ ਲਈ। ਚੱਲਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ। अपने हथियों से धी दा कारज शुभ रचाया। सिंह दे नाल ब्याह के धी दा घर बसाया। ब्याहो आ मेरे बाबला, ब्याहो आ मेरे बाबला, ब्याहो आ मेरे बाबला, ब्याहो आ मेरे बाबला। ऐसे दीदी कुख तो एक योदा दुनिया ते आया। महाराजा रणजीत सिंह जिस दासी ना कहलाया। कई राजे रणजीत सिंह जय कुखा दे विच मर गए। कई ओदे भगत सिंह वर्गे फुल बनने तो पहला सड़ गए। गुरु नानक जे संत पीरां दी बाणी दा है फरमान। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। दुनिया सच्चा धन है लोगो दुनिया नू समझा लो। जागो जागो वक्त की पुकारी है तुम देश को संभालो। जागो 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 रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। मैं निरंतर अपने कर्म करता जा रहा था। खुद तो चुनौतियों का सामना कर ही रहा था, साथ ही बच्चों को भी सिखा रहा था कि कैसे जीवन की राह पर कठिनाइयों, रुकावटों और नकारात्मकता को हराकर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना है। India is a land of sages, and these sages have been imparting holistic education in residential schools or gurukuls since time immemorial. The Gurukul system of education is the epitome of Indian style of learning.
keeping the legacy alive, we in our school strive to impart the same value-based and sustainable education, aiming at the inclusive and all-round development of the students. Nice. What is the strength of your school? 6,000 students. Oh, really? Impressive. Unbelievable. How do you manage 6,000 students in your school? I would like you to visit our school sometime. It's a wonderful idea. We would like to plan a trip of our students to India and visit your school. I'm sure we'll learn a lot from there. मेरे साथी जो मेरा परिवार ही नहीं, मेरा आधार भी थे, उनकी मेहनत रंग ला रही थी। मेरे परिवार की एक के बाद एक उपलब्धि मुझे गौरवान्वित कर रही थी। मेरा मान सम्मान बढ़ाकर मुझे और समृद्ध कर रही थी। पुलिस डीएवी की ख्याति दुनिया भर के शिक्षकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। बच्चों की अचीवमेंट्स, स्कूल की उपलब्धियां जहां फख्र से सर ऊंचा कर रही हैं, वहीं खुशी से आंखें नम भी हो रही हैं। एक ख्वाब पुलिस डीएवी हकीकत बनकर हर क्षेत्र में अपनी आभा बिखेर रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे इस साल नासा जाकर इंटरनेशनल स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करें और जीत कर भी आए। सर, already the students are working on this project. लेकिन नासा जाने के लिए बहुत ज्यादा फंड्स और रिसोर्सेज की जरूरत है, जो अभी हमारे स्कूल के पास नहीं है। आप चिंता न करें, मिस्टर राजन गुप्ता की डीजीपी सर से बात हो गई है। डीजीपी सर हमें 10 लाख की ग्रांट दे रहे हैं। आप बच्चों को नासा भेजने की तैयारी करें। पुलिस डीएवी? यार ये पुलिस डीएवी क्या है? ये कोई ब्रांड है या किसी कंपनी की ऐड कर रहे हो? हमारे स्कूल का नाम है पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल। अच्छा? अब तो हर कोई नासा जाने के सपने देखने लगा है। तो देखने देना, सपने देखने में कौन सी मेहनत लगती है। ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो सभी करते हैं। करते होंगे, लेकिन हमारे जैसी क्रिएटिविटी, ऐसी नॉलेज और ऐसे ऐसे आइडियाज कहाँ से लाएंगे? हर कोई हमारी तरह स्मार्ट भी तो नहीं होता। लीव इट सौम्या, मुझे आप सबकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करें। Hello, Albert, how are you? I'm fine. What are you doing? We are waiting for the result and having a lot of fun. Which school is coming from India to NASA this time? Finally,
The wait is over and the project selected for NASA this year is by Police DAV Public School, Jalandhar. What happened? What happened? Nothing has happened yet. But you focus on your own project, bro. This year you will be stunned to see the jaw-dropping project of Police DAV. तुम देखते रह जाओगे.
ये सत्य है, कामयाबी के समानांतर संघर्ष की भी गाथा होती है। और ये भी अटल सत्य है कि सफलता का आनंद संघर्ष की पीड़ा को कम कर देता है, लेकिन उसके पीछे छिपा अनुभव बहुत कष्टदायी होता है, क्योंकि कई प्रकार की नकारात्मकताएं बाधा बनकर आपको गिराने की, तोड़ने की, हताश करने की, ध्वस्त करने की निरंतर कोशिश करती हैं। मेरे सफर में भी ये दौर है। समय साक्षी है कि बादल कितना भी घना, कितना भी गहरा हो, सूर्य के तेज, उसकी तपिश, उसके प्रकाश को कितने भी प्रयत्न करने पर अधिक समय तक रोक नहीं पाया। उसी भांति जब इरादे नेक हो, सच्ची लगन हो और दृढ़ निश्चय हो, तो नकारात्मकता को घुटने टेकने ही पड़ते हैं।
हर दिशा, हर क्षेत्र में, क्षितिज के भी पार, आसमान में लहराता हुआ खुद को देख रहा हूं। मुझे गर्व है, खुशी है, मैंने देश की तरक्की में योगदान दिया है। मुझे फख्र है कि वे युवा जो मेरे साथ खेलते कूदते बड़े हुए, आज कामयाबी की जिंदगी जी रहे हैं और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। मुझे इस बात का भी हर्ष है कि देश की उन्नति में मैंने पूर्ण योगदान दिया। कि होगी ये इमारत ईंटों पत्थरों की औरों के लिए, होगी ये इमारत ईंटों पत्थरों की औरों के लिए। मैंने तो इसके दरीचों से खुदा का नूर टपकता देखा। From every nook, from every corner, I see God's grace in abundance on this school. और यही एक बात है जिसकी वजह से चेयरमैन साहब आपने देखा कि आपके बच्चों ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दी। सिर्फ स्टेज के ऊपर ही नहीं, बल्कि जो हमने जितने बच्चों को इनाम दिया, आपने देखा कि नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वेयर ऑल दे हैव रीच्ड। And this is the collective effort of DAV and the police. So dear sir, Buller sir, to your vision of putting the two together, thank you very much sir, and I salute you sir. हमारी
आपके सहयोग, आपके प्यार और स्कूल पर आपके विश्वास के साथ ही संभव हो पाया है। ये एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हम पर अपना भरोसा, अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके बच्चों को उनकी मंजिल तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का सफर इसी तरह जारी रहेगा। Such a momentous occasion, celebration of 25 years, the Sibley Jubilee of Police DAV Jalandhar. Police DAV has witnessed miracles performed by all these miracles there in front of you. A memorable event for all of us.
the Silver Jubilee celebration of Police DAV Public School. An enchanting atmosphere brimming with exuberance and vibrance. The zeal will reach its utmost zenith only through the blessings by our worthy chairman, Shri M.S. Farooqui, IPS ADGP State Armed Police, who always extended a supporting hand and expert guidance from time to time. To share his vision and bless our institute with his nuggets of wisdom, I request Mr. Rajkumar, Supervisor, to please escort. इज्जत माब MS बुल्लर साहब, मिस्टर भट्टी, मिस्टर M.K. तिवारी, ये सब हमारे मेंटर्स हैं और इनकी निगरानी में हमने पुलिसिंग सीखी है। जिस जज्बे के साथ हमारे इन सीनियर्स ने हमको पुलिसिंग में गाइड किया, उसी जज्बे के साथ हमको इंसान बने रहने का फ़न भी सिखाया। ये फ़न भी सिखाया कि जिस पुलिस ऑफिसर के सीने में एक नर्म दिल धड़कता हो, किसी भी समाज की वो सबसे बेहतर तरीके से सेवा वही कर सकता है। ये वो धड़कते हुए दिल थे जिन्होंने आज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है। किसी भी समाज में शिक्षक से ज्यादा इज्जत का मर्तबा किसी को हासिल नहीं है, क्योंकि एक उस्ताद, एक टीचर, एक शिक्षक ही होता है जो नेशन बिल्ड करता है, सिटीजन बनाता है। हम माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी के जितने आयाम हैं उनके अंदर कामयाब हों, अपने लिए वो सुख सुविधाएं इकट्ठी करें जिनको देखकर माँ बाप के दिलों को ठंडक हो। लेकिन एक शिक्षक का अरमान ये होता है कि वो कुछ ऐसे तालिब इल्म पैदा करे जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि समाज के लिए लाभदायक हो। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी समाज के लिए शिक्षा है। अगर हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, अगर हम अपने राष्ट्र को प्रोग्रेस के पथ पर ले जाना चाहते हैं, तो शिक्षा से बढ़िया कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। दूसरी बात, इस इंस्टीट्यूशन के साथ एक बड़ी और ये भी है कि हमने यहाँ से सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाने पर फोकस नहीं किया, हमने यहाँ से इंसान भी पैदा किए हैं और ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज का वक्त मैं समझ सकता हूँ, बुल्लर साहब यहाँ मौजूद हैं और 25 साल एक बड़ी जर्नी है, एक बड़ा सफ़र है। जो पौधा, जो बीज उन्होंने बोया था, भट्टी साहब, तिवारी साहब, मिस्टर राजन गुप्ता साहब यहाँ अभी नहीं हैं, तो जो बीज उन्होंने बोया था वो आज एक तनावर शजर, एक दरख्त बन चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफ़र हम शुरू करते हैं, किसी ने कहा था कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, रास्ते में कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो शिक्षा, एजुकेशन, तालीम एक ऐसी जर्नी है जिसमें पड़ाव तो आते हैं, मंजिल नहीं आती। तो ये जो 25 साल हैं, ये हमारा एक पड़ाव है। हमने पलट कर देखा कि हमने कितना लंबा सफ़र तय कर लिया और अब हम आगे देख रहे हैं कि हमने कितनी नई आकाश गंगाओं की खोज करनी है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं उन सभी मुसाफिरों को जिन्होंने इस सफ़र को आसान बनाया है।
जिन्होंने नई मंजिलों की जानिब गामजन होने के लिए बुनियादें रखी हैं। लेकिन मैं आज, चूंकि ये जर्नी ऐसी है जिसमें बैटन चेंज होते रहते हैं, तो जो मेरे सीनियर्स के ज़रिए ये बैटन आज हमारे हाथ में है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उसी शिद्दत और जज्बे के साथ हम इस काविश को और आगे भी जारी रखेंगे, ताकि इस तरह के 10-25 साल हमारे सामने से गुजरे और हम एक बेहतर, खूबसूरत और स्वर्णिम भारत बनाने में कामयाब हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। Asset of any school is the hard-working and the sincere students. The efforts, the academic success clearly speaks volumes of a school, as we have the stream of prodigious young minds. We couldn't have our annual function since 2018 because of COVID. Hence, we are compiling the achievements of these 4 years in this mega annual prize distribution as a grand celebration and felicitations. To do the honor, I request Shri M.S. Bhular, IPS DGP retired, Shri M.A. Farooqi, IPS ADGP State and Police, Chairman LMC, to please do the honor of giving the prizes to the students. And for this, I request Dr. Mrs. Rashmi Vej, Principal Police DAV Jalandhar, ARO Jalandhar Zone, CBSE City Coordinator to escort. We also have with us Shri Diya Bhatti, IPS DGP retired, and Shri M.K. Tiwari, IPS DGP retired with us. Many students of 18 to 20 batch have either gone abroad or are studying at distant places, so we are acknowledging the presence of their parents who could feel proud at the announcement of the award's name. Their pics will be displayed on the screen and they could feel their presence on this great momentous occasion. Now we begin with 2018-19 batch, class 10 topper. For this, here we are. Amit Jalota scored 96.8% and hence gets a cash prize of 2,500. He is absent. We have serial number 1, Akansha Vig, who scored 96.4% and hence gets a cash prize of 1,500. Now we begin with 2019-20 batch. Swapnil Chipal scored 98.8% and hence gets a cash prize of 3,000, absent. Serial number 2, Sirjan Segal scored 98.4% and hence gets a cash prize of 2,000. Priyansha scored 97.6%, hence gets a cash prize of 1,500, absent. Now we're beginning with 2020-21 session for the 10th class. Here we have Mansi Agarwal scored 99.4% and hence gets a cash prize of 3,000. Sanya Arora, serial number 4, scored 99.4% and hence gets a cash prize of 3,000. Jabji scored 99.2% and hence gets a cash prize of 2,500. Harveen Kaur scored 98.5% and hence gets a cash prize of 2,000. Gargi Natta scored 95.6% and hence she gets a cash prize of 1,500. Gurleen Kaur scored 95.6% and hence gets a cash prize of 1,500. Serial number 9, Ansh Kaushal scored 95.2% and hence a cash prize of 1,000. Now we begin with 2020-21 session. Here we have
Bhumika Saini, who scored 98.2%, hence getting a cash prize of 3,000. Serial number 11, Garsha Bansal scored 97.6%, hence getting a cash prize of 2,500. Mehek Ved scored 97.6%, getting a cash prize of 2,500. Arjun Veer Singh Road scored 97.2%, hence getting a cash prize of 1,500. Sheetal Sharma scored 97%, hence getting a cash prize of 1,000. And now we begin with class 12. For the session 2018-19 from Humanities stream, we have Pavit Son scored 97.8%, hence a cash prize of 3,000. She is absent. Relish scored 96.6%, getting a cash prize of 2,500. Dimpy Sharma scored 96.4%, getting a cash prize of 2,000, absent. From the commerce stream, we have Palak Deep Kaur scored 96.2%, hence getting a cash prize of 2,500. Anshu Gandhi scored 95.2%, hence getting a cash prize of 2,000. She is absent. Now from the non-medical stream, we have Yashika Bansal scored 96.8%, getting a cash prize of 3,000. Tarun Kumar scored 95.2%, hence getting a cash prize of 2,500. Tishita scored 95%, hence getting a cash prize of 2,000. And now from the medical stream, we have Amanjot Kaur scored 95.8%, and hence she gets a cash prize of 2,500. Serial number 21. Ritik scored 93.6%, gets a cash prize of 2,000. He is pursuing MBBS from Government College, Amritsar. For this session 2019-20 from Humanities stream, we have Meet Kaushal, scored 97% and hence gets a cash prize of 3,000. Kulina scored 96.6% and hence she gets a cash prize of 2,000, absent. And now from the commerce stream, we have Avni scored 97.4% and getting a cash prize of 3,000. Arshpreet Singh scored 97% and gets a cash prize of 3,000, absent. Akul Goyal scored 96.8% and hence he gets a cash prize of 2,500. Simran scored 96.4% and hence she gets a cash prize of 2,000. Divya Kapoor scored 96.4% and hence a cash prize of 2,000. And now from the medical stream, we have number 28. Karan scored 98% and hence a cash prize of 3,000. Harnoor Singh scored 97.4% and hence a cash prize of 2,500. At present, he pursuing BDS from Government College, Amritsar. Muskan scored 95.6% and hence a cash prize of 2,000, absent. And now we're beginning with 2020-21 session. First, with the Humanities stream, we have Tarpan Soni, who scored 98.2% in +2, getting a cash prize of 3,000. Nimrit, who is absent, she scored 98% and a cash prize of 2,500. Number 31, Divya Malhotra scored 97.6% and hence a cash prize of 2,000. And now, beginning from the commerce section, we have Gautam Gupta, who scored 97.6% in +2 and 96% in his 10th standard, hence getting a cash prize of 4,000. Mehek Bhandari, who is absent, scored 97.6% and gets a 3,000 cash prize. Number 33, Jasleen Kaur scored 96.6%, getting a cash prize of 2,500. Samiksha Seth, who is absent, scored 96.6%, hence a cash prize of 2,500. Muskamdeep Kaur, again absent, scored 96.6% and a cash prize of 2,500. Now,
Number 34, Shreya Sharma scored 96.6%, getting a cash prize of 2,500. Snigdha Soni is absent, Pushti Sehgal also absent, and Monisha also. They all three scored 95.6% and hence a cash prize of 2,000 each. And now from the non-medical stream, we have Om Gupta, who scored 99% in plus 2 and 96.8% in 10th standard. It's a matter of great delight for all of us that Om Gupta has cleared the NTSC 2019, and because of his high merit in JEE Advanced, he is at present pursuing BTech in Mathematics and Computing from IIT New Delhi, hence getting a cash prize of 8,500. Next to the line of great achievers, we have Astha Sumra, who is absent. She scored 98.4% in plus 2 and 97.2% in 10th, hence getting a cash prize of 5,500. At present, she is pursuing BSc Honours in Statistics and Actuarial Science from Delhi University, hence getting a cash prize of 5,500. Now here we have on serial number 36, Sia, who scored 97.6% in plus 2, getting a cash prize of 2,000. Now we have Astha Sarwal, scored 98.4% in plus 2 and 96.6 in 10th standard, hence getting a cash prize of 5,000. At present, she is pursuing MBBS from Faridkot. Next in the number, we have Palak, who scored 97.4% and gets a cash prize of 2,500. At serial number 39, we have Jaspreet Singh, scored 96.6%, getting a cash prize of 2,000. He is pursuing MBBS from Faridkot. And now we begin with 2021-22 session. Humanities stream, we have Saurabh Singh, who is absent, scored 97.4% and hence a cash prize of 3,000. Now we have serial number 40, Dhanishta, who is absent, scored 96.6% and hence a cash prize of 2,000. Many philanthropists have instituted a host of awards in the fond memory of their loved ones in order to acknowledge the students who are toppers and also to promote education in their own unique way. Professor C.P. Piplani Memorial Award, which has been initiated by a worthy principal ma'am, Dr. Mrs. Rashmi Bej, in the fond memory of her father. This award is given to students who scored highest marks in English. In the same vein, Mrs. Surendranath Vahi Memorial Award has been instituted by Mr. Vinod Vahi and Mrs. Bela Mahindru in the memory of their father. This award is given to students who score highest marks in accountancy. And it's a matter of great delight that Drumnik SC gets the Professor C.P. Piplani Memorial Award for scoring highest in English, that is 99, and also gets Shri Surendranath Vahi Memorial Award for scoring 100 marks in accountancy, hence a cash prize of 6,000. Her close one is collecting this award. Mrs. Meenakshi Datta Memorial Award has been instituted by Mr. Ashwini Kumar Datta in the memory of his wife, Mrs. Meenakshi Datta, who was a teacher in our school. Ridhima Malhotra scored 97.8% and she gets Shri Surendranath Mahi Memorial Award and Shrimati Meenakshi Datta Memorial Award for scoring 100 marks in economics and accountancy, hence a cash prize of 5,500. Now the next we have Astika Rati, who is absent, scored 97.2% in plus 2, hence a cash prize of 2,500. Parneet Kaur Chawla is also absent, scored 96.6% and a cash prize of 2,000. Now from the non-medical stream, we have Arshdeep Kaur Pawar, who is again absent, scored 97.6% in plus 2 and 98.6 in 10th and scored 99 in chemistry. Shrimati Prem Mahindru Award has been instituted by Mr. Vivek Mahindru, an industrialist, in the memory of his beloved mother, Shrimati Prem Mahindru. Arshdeep gets Shrimati Prem Mahindru Award for scoring highest in chemistry and hence a cash prize of 7,000. Now next in the line we have Vaibhavi Yadav, who scored 97% in plus 2. Professor Shyam Sundar Memorial Award has been instituted by Mrs. Rupa Bhala in the memory of her father.
Webivi gets Professor Shyam Sundar Memorial Award for scoring 100 marks in mathematics. It's a great honor for us that she also cleared NTSE 2020. She gets a cash prize of 5,000. Naman Bogoria, number 45, scored 96% in plus 2, hence getting a cash prize of 2,000. And now beginning with the medical stream, Manik Gupta scored 96.8 in plus 2 and he gets Srimati Prem Hindru Memorial Award for scoring highest in biology and physics. He gets a cash prize of 7,000. At present, he is pursuing BDS from Dental College, Amritsar. Mannat scored 96.8% in plus 2 and 10th standard. Baby Sunaina Singh was a budding star and a multi-talented child who was snatched away from us by the cruel hands of destiny when she met with an unfortunate accident. Sunaina Singh Memorial Award has been instituted by the MT department. This award is given to the passing out girl student every year for her outstanding contribution in the field of cultural activity. Mannat gets Srimati Prem Hindru Award for scoring highest in biology and chemistry, and also Baby Sunaina Memorial Award for the best performer in cultural activity 21-22. Hence a cash prize of 8,500. Simranpreet Kaur, who is absent, scored 94.2%, getting a cash prize of 2,000. At present, she is pursuing MBBS from Rajpura. Aryan Kalia scored 95.6% and he gets Shri Surendranath Mahi Memorial Award for scoring 99 in business studies, hence getting a cash prize of 1,500. Shivangi, who is absent, scored 93.6% and gets Srimati Prem Hindru Memorial Award for scoring 99 in biology, hence getting a cash prize of 1,000. Now, Inspire Innovation in Science Pursuit for Inspire Research is one of the flagship programs of Department of Science and Technology, Government of India. This aims to motivate the students to give innovative ideas. It's a matter of great delight that Police DAV has plethora of such innovative minds. In session 2019-20, our 3 students got selected for sharing the innovative ideas by Government of India. Here we have Ritika, Onkesh, and we have Mayank Kumar. All these 3 students have also received a cash prize of 10,000 as a reward from the Government of India. And I would like to add that Mayank has also cleared NTSE 2021. All these students have worked under the mentorship of their guide Chandan. Abhijay Singh Kera got selected for DLEPC under the Inspired Manak Award 2020-21 for his idea about garbage compressing and received a cash prize of 10,000 from the Government of India. Abhijay Singh Kera represented Team India in 15th International Earth Science Olympia 2020 in Usta Valley, Italy. He not only made India proud by winning 1 gold and 1 silver, he is the only student from Punjab who has ever won accolades at this level. And it's the first time that India got medal in this field, and so he will be honored by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, on 25th December 2022. He is, next is Srimati Krishna Shur Memorial Award has been instituted by Mrs. Sandhya Diwan in the loving memory of her mother. Jasleen Kaur Bhogal gets Srimati Krishna Shur Memorial Award for proficiency in music and hence a cash prize of 2,500. Harjinder Singh also gets this award for his proficiency in music and hence a cash prize of 2,500. Vinay Kumar, a young celebrity star, got selected among the 15 participants across India for Saregama Nirgal Champs and hence he gets a cash prize of 3,000. Please give a huge round of applause to our tiny star, a tiny celebrity of Police DAV. Atul Lohan has been declared as the best player for the session 2021-22.
And now is the time to honor the head boy and the head girl of the school. Here we have Suzal Ratkar, the head boy of the school. And here we have Mohini Khanna, the head girl of the school. Apart from academics, school has plethora of cultural activities and healthy competitions among the various houses allotted to every student. This year, the runners-up trophy goes to Yashasvi. For this, I call the house in charges of Yashasvi House, Rashi Bhatia and Vaishali. I also call upon the house mentors of Yashasvi House, Mrs. Gurpreet Jol and Mrs. Tripta Gujral. They get the runners-up trophy. The overall trophy goes to Manaspi House, and here we have the house in charges, Nishta, Kurana and Astina. And we have the house in mentors, Mrs. Suruchi Sharma and Mrs. Neetu Gupta. Thank you, sir. Thank you. Now I request Shri M.L. Yeri sir to please say a few words and bless the audience and the students. Esteemed ladies and gentlemen, well, first of all, I congratulate Mr. Bulla, you see, for laying the foundation stone of this institution. And I can say, of course, it's a 25 year of the police DAV school, but otherwise we can say it's a wedding anniversary of the DAV with the police. So we are also celebrating 25th anniversary of the DAV and the police, Jalandhar. Farooqi Sahab, the words which you have spoken, कि हम इंसान बनाते हैं, that shows your vision, that shows your, you see, the love for the country and love for the human being. And I salute you, sir. Bullar Sahab, I had so many meetings with you when the school was in making, and I was the director of the DAV Managing Committee, and I was also looking after this school. So rather, I feel on behalf of the DAV College Managing Committee, we are grateful to you that you have always supported Mrs. Rashmi. And it's all with your support and with the support of the police officer, she has been able to discharge her duty with very dedication, devotions. And I may tell you that there is a saying that the speed of the engine is the speed of the train. So our engine, Madam Rashmi ji, his devotion and dedication is unparalleled. Nobody can beat her. And she has not only developed this school, she has developed many of our DAV school. She is the source of her inspiration, and such persons, you see, they rise higher and higher in their life.
I am reminded of the one poetry that, and this is for Madam Rashmi, our very dynamic and energetic and visionary principal, heights by great men were reached and kept. आपने बहुत ऊंची उड़ान ले ली है. शहीन प्रवास जो है ना वो आप ही हैं. Heights by great men were reached and kept, were not attained by sudden flight. While their companions slept, they were toiling upwards in the night. So, and that is Madam Principal Rashmi Vij. And for Madam, you are like my sister. I can say for you a few lines of the Robert Frost. These are for you. Woods are lovely, dark and deep. I have promises to keep. Miles to go before I sleep. I salute you and wish you all the best in all times to come. May you rise day in and day out. And I can assure the parents that your children, they are in the safe hands of Madam Rashmi Vij. Charveti, charveti, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो. ਆਉਂਦੇ ਮੇਲੇ ਬਣ ਠੜਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਲੜ ਮੁਟਿਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗੋ ਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਅੜੀਏ ਨੀ ਹੋ ਗੱਭਰੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਅੜੀਏ ਨੀ ਹੋ ਗੱਭਰੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ 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 ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰੋ ਹੋ ਗੱਭਰੂ ਆ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ 7-7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੋ ਲਾਲਿਆ ਤੇ ਜੜ ਲੈ ਕੋਕੇ ਹੋ ਮਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਵੀ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋ ਬੱਬਾ ਤੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਏ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਛਿੰਝ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਹੋ ਕੱਸ ਕੇ ਲੰਗੋਟੇ ਆਏ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦੇ ਹੋ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਗੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਛਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਡੰਡ ਪੇੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਢਾ ਗਿਆ ਨੂੰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਢਾ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ ਲੱਠੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਸਨੇਟੀ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਆਵੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘੇ ਮਾਇਆ
लगदा पंजाब नचदा आओ सानू त्रिंजड़ा च पैण भुलेखे यारा दी गुलाबी पग दे शैल शबीले गबरू मुखड़े गद गद करदे ने ओ मुखड़े गद गद करदे ने किधरे लगदे खाड़े किधरे मेले लगदे ने ओ धावा बोलने आईया फौजा जिवें नवाब दिया ओ धावा बोलने आईया फौजा जिवें नवाब दिया ओ मेरी सा मेरे इस पंजाब दिया ओ मेरी सा मेरे इस पंजाब दिया मेरी सा मेरे इस पंजाब दिया बजना ते छेड़ा वांगू गजना कट के वैरी दी जान वैर कड्डना ना मैदान छड्डना हो दोहां विच कार जदों फैर चलदे तद वाही मचदी अड़ख नाल जाउण दी गवाही परदी ते मुछ खड़ी जट दी अड़ख नाल जाउण दी गवाही परदी ते मुछ खड़ी जट दी अड़ख नाल जाउण दी गवाही परदी ते मुछ खड़ी जट दी नचे नाल कुंडे वाला नचे यार नचदे जंडी दे नचदे जंडी दे सारे नी इत्थे तेरा ढोल नचदा नचना बदलिए नारे नी इत्थे तेरा ढोल नचदा उरले पासे मोठ बाजरा परले पासे मेहंदी कल्याणा जावी खेत नू किकर दे घट हो रहिंदी हो कल्याणा जावी खेत नू हो टुट गई यारी ते मन मुड़िया मुड़िया लगदा ए हुण ना अखियां दे विच पहला वाली यारी उदों कहंदी सी ना जिउंदे जिउं मुख मोड़ूंगी सो तेरी धोखा देगी बल्लिए तू कोला तो हारी ओ धोखा देगी बल्लिए तू कोला तो हारी ओ धोखा देगी बल्लिए तू कोला तो हारी जट चढ़दे फिर जय खान नू ओ बड़ी भाभी लैंदी थमी ओए वे मैं कदे ना जोर बंगारिया ओ जट्टा कदे ना आयो कमियो हो जुगनी जदों शहर नू जावे हो सुरमा पूछा वाला पवे हो नक विच कोके नू लिशकावे ओ वीर मेरे आयो जुगनी हो मेरे आ जुगनी कहंदी आ ओ नाम साईं दा लैंदी आ हो चलो चलो मुंडे हो घरां नू चलिए चलिए समिया पा के हो एक तेरे पैर दी झांजर हो करदी रांझण रांझण जरा तू सानू नच लैण दे सोहणिया अजे ना जा सोहणिया अजे ना जा हो टाठा मार नचना अज वेली खुदा हो रब्बा यार नू मेरा हर मां दी सोहणी वास्ते हो सोहणी वास्ते घड़े दे पां दी हो नचदे गाउंदे खुशी मनाउंदे घर नू तुर चले ओ भंगड़े दे विच पात माला गबरू उड़ चले अब कईयां दे दिल लुट्टे हीरा बाजा मादिया हो मेरी सा मेरे इस पंजाब दिया ओ लुट
feeling thankfulness and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me start by giving glory to the Almighty God for making today's function a resounding success. First and foremost, I extend a hearty thank you to our guest of the day, Shri Gaurav Yadav, IPS DGP Punjab, for honoring us with his gracious presence. I express my heartfelt gratitude to all the dignitaries for their benign presence on this memorable day. A special thank you to the parents for joining us on this joyous occasion and encouraging the students. Well, ladies and gentlemen, an event of this stature cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks in advance, and it requires planning and a bird's eye for details. On behalf of MAM Principal, Dr. Mrs. Rashmi Vij, I express a deep sense of appreciation for the team of very motivated and dedicated faculty who worked ceaselessly these past weeks. I would like to express our sincere thanks to the members of media for evincing interest in giving excellent coverage to the event. Last but not the least, a very big thank you to the non-teaching staff, maintenance staff, and the transport department for working tirelessly to ensure this occasion becomes a memorable success. Brilliant faces that we have witnessed today. We wish all the students a great success, fame as well, so that they have all high human values and make this world a better place to live in. I would like to thank each one of you who is a part of this institution. I again thank you all for being a part of this mega event and making this celebration a grand success. Thank you all for sparing your time and being a part of us. Thank you, everyone.